Hello and welcome to the very first episode of In Conversation by Amstellar. Today we have guests from Ahmedabad music business. We have Acharya here, Dhanji, and then SIYAAHI. CIY. Now my first question is, you guys are on tour, right? Yes. Yeah. तो tour कैसे चल रहा है आप लोग का? Hectic चल रहा है भाई. Hectic, yeah, it's fucking hectic, Yeah. but it's awesome. It's been fun, man. It's been a lot of like enjoyment. Like we had a good time just traveling to and from. That has been a great journey, man. Yeah. रुअब के बाद तो फैन फॉलोइंग बहुत ही मतलब तगड़ी हो गई है. Yeah, चालू है, काम चालू है. काम चालू है. और रुअब Deluxe or something like that. Yeah, the deluxe comes out leg 3 baji. This is a leg 2 going on, leg 3 baji. Nice. That's cool. नहीं दे रहा और भी. No, no, that's okay. Which has been the craziest show till now? Baroda. Baroda, yeah. For me, Baroda was wild. Yeah. Bangalore was crazy. Chandigarh was fucking crazy. I think Pune. Pune was wild. Yeah, Pune. Starting Pune for Pune और बड़ौदा unexpected as well. Udaipur, actually Udaipur also. Yeah. Jajam, shout out Jajam. Kudi pitte pe. Vamp bro, Shout to Vamp, baby. Shout to Vamp. जयपुर में shout to Heartbone. ये इतने खतरनाक शो ऐसे कलाकार है अंडरग्राउंड में. Tier 2 cities we are hitting, right? Nice. That's why we're in Anand, Gujarat today. मैं आनंद का बोल रहा हूँ, पब्लिक बोल रही है किधर है? By the way, it's a historic moment क्योंकि आनंद में आज तक कभी रैप शो हुआ नहीं है. Seriously? Yeah, it's you guys are the first people who are bringing the culture in our Fuck city. yeah, fuck so, yeah. Thank you for that. Absolutely, boom. और आप बादशाह कोई नहीं है? नहीं बादशाह नहीं. एक बार दर्शन रावल आया था बट वो Shout out Dip Zip. दर्शन रावल और जिगर धरन गढ़वी और वो सब आते हैं. ये तो जैज भाई. Nothing like this and Right, crazy. तो Are there people who listen to hip hop here? हम लोग जब मार्केटिंग के लिए निकले थे ना तब we encountered some people but it's like very Not as much. yeah not as much you can expect. बहुत ही कम शोर है इधर but जो भी लोग सुनते हैं they are very familiar with what you guys Right. do so that's pretty good. Kids. Like, no, I'm saying कि like 10-year-olds, हाँ them 5 years later, yes them 7 years later, yes. type of shit. Yeah. So मेरा सबसे पहले क्वेश्चन धनजी आपसे है कि रुआब में बहुत सारे फीचर्स है राइट. तो द थिंग इज व्हेन यू कोलैबोरेट विद पीपल और मैंने ये भी देखा है क्रेडिट्स में देखा है मैंने कि जिन लोग का भी फीचर है वो सब ने अपना वर्स खुद लिखा है. Correct. So how is the collaborating process because I think it's very complex. Right. You gotta pick the right people. I think number one shit. You gotta know what the artist का strength क्या है, what they can do to a track, cause good artists can fuck up a track if Yes, they're you know. So mainly collaborating process is as a understanding what the artist is about, what Yes, they can do, that's true. their limitations also. मैंने जब व्हाट टू द क्रेडिट डिपार्टमेंट सुना था Right. बाय द वे सिहाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ Fuck Khalifa Wakans. या मेरे लिए सबसे बेस्ट फीचर योर वाज इन व्हाट वुड द क्रेडिट डिपार्टमेंट Fuck yeah, दैट्स fuck सो yeah. फकिंग गुड. Shout out. वो सॉन्ग मुझे कैसा लगता है कि अंडरग्राउंड रैप सीन में कैसा है कि बहुत ही स्ट्रगल और वो सब है मतलब यू गाइस आर लाइक शाउटिंग योर भड़ास निकल भड़ास निकाल रहे हैं. एंड मैंने ना आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट और नॉट जब से आया है व्हाट वुड द क्रेडिट डिपार्टमेंट डू मुझे कभी भी ऐसा होता है ना आई जस्ट शाउट दैट सॉन्ग आउट लाउड. Fuck yeah. Fuck yes. जोर जोर से मैं चिल्लाता हूँ अपने रूम में जैसे मेरी मम्मी बोल रही है भाई आवाज ही में कर. Yep. बट या Right song. Yeah. या मतलब आपका वर्स यू किल्ड इट मैन. Fuck yes. वो और बहुत सही था. हाँ दैट वाज रियली गुड. The whole process of कि ये वर्स में लास्ट वर्स रखने का है, इतने हेवी हिटर्स है, सबको प्लेस किया और लास्ट वर्स में we sort of go back and forth. It's him. It's his verse. मैं से खाली ऐसे just coming in. तो it was that idea जो लास्ट वर्स में ये सब बकचोदी गिनाने का है थोड़ा बहुत. Yeah. हाँ, but the direction was great. मतलब कि देखो इस बारे में बात करनी है और इसी बारे में बात करनी है और वो बहुत ही सही प्लान आउट हुआ. Credit department. Yeah. I think that song and also I think that one has the same energy you're talking about, where it's this energy where you can Yeah. take out whatever frustrations Pain, you have. yeah. Lets you do that because he's doing that, and so is like everybody else Yeah. on it. That one, I think, ek kabhi dono nahi. Ek That kabhi, is yeah. true, I think that was yeah that is have that. I in my opinion that song is very cinematic because उस song में ना like दो stories है. पहले में it's very easy going. Right. You just it's like world building of Yeah. yeah and then you just
shout your pain away. Yeah. And that's very do a Catharsis. yeah, that's Catharsis. that was very strong. Yeah. Fuck yeah. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तीनों से मेरा क्वेश्चन है बाय द वे, ये कि आप लोग की सम ऑफ फेवरेट फिल्म्स कौन से हैं? लाइक आई नो यू कांट जस्ट चूज वन, इट्स वेरी हार्ड. Bluff Master, I can choose very easily. Bluff Master. Master. ये वाली क्या नाम, अभिषेक बच्चन, बच्चन, बोमन ईरानी, रितेश देशमुख, नाना पाटेकर. Yeah, Uh, yes, I would say my favorite film. what's yours? भाई एक मूवी आई थी उसका नाम था भागम भाग. Yeah, it's very funny. I हाँ. होगा भागम भाग. Serious? Final but And I think I'd go with something he's shown me, man. Like at least visually, Lion was something that was pretty big. oh man, Lion is so Yes. fucking good. It Yeah. was huge, It's like Lion is sort of a cinematic achievement, I guess. Yeah. especially for the time. Yeah, and it's even very surprising कि आज के ही दुनिया में it's very Still relevant. relevant, yeah. It's Yeah. very relevant right now with what's happening. It's kind of timeless in Yeah. that way, because those Yeah. kind of And I think that's what makes a masterpiece, right? कि it's should be timeless. Yeah. Yeah. That's And I think the same of Ruab, क्योंकि आज not तक- enough time has passed to say that though. You know, like हाँ मतलब 10 साल. Yeah, but 10 साल बाद कोई और भी सुनेगा तो they are going to appreciate it because it's We hope that. We Yeah. hope that. We work for that. Yeah. Another movie I just want to shout out is Synecdoche, New York. Something else, Yeah. Charlie Kaufman. Man. Yeah, Kaufman. Yeah, Kaufman. Yeah. Charlie Kaufman is so A good. lot of Kaufman shit. Yeah. Yeah. Anything that guy did though. Yeah. Same Yeah. as well. Same Kaufman. Yeah. R.I.B. Have you seen Dune Part 2 yet? Do Part 2. Yeah. The Do Part 2. ના Part 1 નહીં જોયું. Part 1 is the Part 1 નહીં જોયું. yeah. It's मैं चालू करूँ तो मैं खबर नहीं नाम आ जाए मैं मुक्के दूँ. Maybe I'll Dune revisit it. Yeah, Dune Part 1 mostly it's like world building. Right. Dune Part जो है उसमें सब पे ऑफ है. Dune Right. Part 1 पूरा ही पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग पे है. Right. It's like second season સુધી રાહ જો એવું हाँ, ના કર that's- એવું ના કર પણ મારા જોડે. Like Breaking Bad की पहली सीजन जैसा है. Yeah. पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग yeah. देन पे तुम ऑफ देखा Breaking Dune Part 2. Shit. एक और सवाल है कि मैंने ना जब रुआब रिलीज होने वाली थी उसके 1 या 2 वीक पहले आपकी एक स्टोरी देखी थी कि यू आर स्टिल राइटिंग एंड आइडियाज आर स्टिल कमिंग अप. सो लाइक डिड एनी ऑफ दैट लास्ट मोमेंट आइडियाज मेड द फाइनल कट? Yeah. I think I was talking about then Limited Liability, track number 7. Yeah. So yeah, that was the last track I was writing. That is the one that made the cut. The chille chille mein lakin naakhi do. And I think it's one of my favorite tracks. Limited liability is also like a lot of shouting, right? Yeah. It's good. Too much. Neil as a whole collection. Neil CK, everybody. Bajo Studios. Gumagam worked a lot on Ruab. He has a lot of screams saved on his computer from the sessions. So when are the music videos are coming out from the damn. album? Like मैंने I'm working on world building right now. आपने I know that कि आपने शूट तो की है कुछ Yeah, shows. yeah. I've shot a lot of that shit. I've shot so much. There's enough for like 3 videos, I think. Can I ask कि कौन सी है? Teji, in event, and Thaltej Blues nu मैं जो shoot कर दूँ ये yeah, these 3 videos. But yeah, music videos hopefully direct for this next project we are working on. We're still working on, but I think there's 1 week left. जिसका नाम है अभी तक कुछ ऐसे ढंग का फाइनल नाम नहीं है. अच्छा. 2-3 है. So it's like working title, कुछ working title तो like, I think तुम बताओ भाई, तुम बताओ. बहुत टाइम हो गया नाम क्या भाई मतलब कुछ working title तो होगा ही I guess. Amdani City Limits Volume 1 for all intents and purposes. मुंह कवे Move away. एक टाइटल है Move away and SG Highway Elevated Corridor. SG Highway Elevated, yeah. It's one title by the way. All of these. All of these just one title. So मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी के लिए अंडरग्राउंड रैप सीन में से आप लोग सबसे ज्यादा किसको सुनते हो? बागी मुंडा लिट ट्रस्ट. बाकी उनमें शिकरीवाल. I think I'm listening to a bunch of Rebel again. Like a lot of Rebel 7. Yeah, Rebel 7. Yeah. Bunch of them. भाई CIY कोसाइन. नहीं ब्रो अहमदाबाद का एक रैपर है
Snappy Carl, baby, Snappy Carl. Shout out. बहुत जल्दी बनेगा भाई, बहुत ही इवेंट वाला पर यार और रैपर है फिर और अहमदाबाद में खान मैक यस मैक डीसी यंग मैक यंग मैन डीसी बहुत सही कर रहे हैं लोग काम। बाकी बाकी यही ब्रो आसपास के लोग हैं। बड़ोड़ा से रसला भाई को शाउट आउट देना चाहूंगा रसला भाई का बड़ोड़ा बजरंग रसला भाई ओजी इन द सीन फ्रॉम वे बैक गुजरात हाई कोर्ट रिप्रेजेंट स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करने वाले रसला भाई एवरीडे शिट तो अहमदाबाद से मेरे को ये याद आया कि अहमदाबाद में शो कब हो रहा है, मतलब लाइव इन एम मे फर्स्ट वीक May first week. Yeah. Or any guest appearance or something like that. there's a huge lineup बहुत बड़ा lineup and never Fest. Yeah, क्योंकि it's live in MD5 we started with 1 2 3 4 गांड फट गई तो पांचवा वाला ऐसे थोड़े बुंडे फाड़ गई and we have people from New Delhi and some from Bombay and people who have not been here before. Nice, that's good. So yeah. Yeah, something new for the people as well. Because that's what we're trying to do with like Yeah. namely bring somebody every time. Yeah. You know, something that they haven't heard. हाँ, Expose them. culture के लिए. Yeah, expose them like the people को expose करे अपने नए आर्ट फॉर्म और नए अंडरग्राउंड म्यूजिक के साथ. I wanted to ask, मतलब ड्राइव इन टू पर तो आप मतलब धनजी, सिहाई और रसला आप 3 काम कर रहे हैं ना. मेजरली ये और असला कर रहे हैं। अच्छा, तो when is it coming out? बुलाओ भाई बुलाओ। नहीं क्यों नहीं। जल्दी खाली गई जगह दर माटे स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रसला भाई लेट्स गो चेक ये रसला भाई और इनने बनाया है काफी ड्राइव इन सिनेमा 2 का संगीत तो जो भी क्वेश्चन है इनसे हाँ, पर डेट मत पूछना किसी को भी महासंग्राम से पहले 27-25 पहले ट्राई करेंगे खत्म हो जावे होली डीसी 2.1 है होली के पहले खत्म हो जावे हाँ. या तो कितने टाइम से काम चल रहा है ड्राइव इन पे? 4 महीना हुआ भाई 4-5 साल 2019-2017 के डेमोज है वो टेप पे और रुआब बनाने में धनजी- कितना टाइम लगा था? That was a couple years. 1-2 साल बट फिर अभी ये अपने रसला भाई के साथ 4 महीने में सब काम निपट गया है. ऐसे होता है भाई देखो ये इनके साथ तुम सेशन में बैठो ना तो पता चले का बहुत जल्दी होता है. समटाइम्स यू डोंट वांट इट दैट फास्ट यू नो सो जल्दी पता है कि जल्दी ऐसे सेशन होते हैं हमारे. मैंने सर्कल टोन का एक इंटरव्यू देखा था. ही वाज टॉकिंग अबाउट रुआब एंड कोलैबोरेटिंग प्रोसेस. ही सेड दैट धनजी के साथ कोलैबोरेट करना इट्स वेरी हार्ड क्योंकि तुम दोनों के आइडियाज कभी कभी ना वेरी कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, लाइक पोलराइजिंग होते हैं. Definitely. या सो वाज इट दैट फ्रस्ट्रेटिंग? Yeah, it's frustrating with almost everybody. सो यू आर द डायरेक्टर ऑफ रुआब. Hmm. तो आप अगर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी चीज पे, सो हाउ कैन यू टेल दैट कि आप आर्टिस्ट को ऐसे कैसे समझाएंगे? मतलब Just बोल के कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ. This is how, cause it's my album. Like what the fuck we talking about? तो if it's like a tape, like मैं ये और ये 3 मिलके जो tape बना रहे हैं और मैं और ये tape बना रहे हैं, which are actually coming out, you know, soon. तो we are finishing that and there are some differences, but we are like it's our collaborative tape and this is what we want to do. We have to make compromises then. But Ruab was something extremely personal. Yeah. And that's completely mine. So everybody that was working on it, it could not have been possible without them. But they knew what we are doing, which is working on what I'm doing. बट धनजी खुद भी उसको सुनाएंगे ना तो उसको फिर वो उसमें पहली चीज वो अपोज ही करेगा वो एवरीथिंग वी शो Not true. That's actually him. रसला आऊ करतो आखो दाड़ो छे. भरोसा रखने का कि दूसरा वाला वो ट्रैक संभाल लेगा, मतलब उतना है। हाँ, मतलब जो भी डिसीजन पे आते हैं, जिसका भी डिसीजन जो भी होता है, जिसका भी आइडिया होता है, इट वर्क्स आउट। मतलब हम लोग के लिए इतना काम किया अभी तक, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तीनों ने लड़के कुछ डिसाइड किया और फिर काम नहीं किया ऐसा, या फेल हुआ है कि यार ये नहीं हो सकता ऐसा। मैं इसलिए पूछा कि मैं ना आई बीन मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड शिट फॉर द पास्ट 4 years. तो मैं अपने दोस्त लोग के साथ ही बनाती हूँ कि ऑब्वियसली आई कांट अफोर्ड अ क्रू, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू मेक अ फिल्म.
तो मेरे कभी कभी झगड़े हो जाते हैं उन दोस्त से, मतलब I want to explain them my vision, but they'll put something else, and then we don't know how to compromise. Yeah, Filmmaking is even harder because it's very multidisciplinary. yeah. So there's a lot of It's things that can patience, go a wrong. lot of patience. Of course it is, yeah. And it's like a lot of things can go wrong, and it will. A bunch of them will. 100% not work out. Have you seen Apocalypse Now from Francis Ford Coppola? आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है? No, I've not. He That dude went through hell. Yeah, I know. Yeah. That was his last film, and it really fucked him up. Yeah, at one point he decided to shoot himself. Damn. Because the film wasn't going in his way. Right. तो मैं कभी कभी I obviously I don't want to end up like that, but do you ever think कि कभी मतलब कोई आर्टिस्ट इतना फ्रस्ट्रेट होके कभी भी ऐसी सिचुएशन में जा सकता है, लाइक उसमें क्या है, सब अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ काम करने का, जो हाँ। ट्रस्ट वर्दी कोपोला को बोलोगे? थोड़े क्लोज लोग हो, थोड़े जिनके हाँ। साथ अपना अच्छा कनेक्शन है, भाईचारा जिनके साथ है, या जान पहचान का है कि नहीं? मालूम तो वैसा होना चाहिए भाई, हाँ। जान पहचान वाला होगा तो वो भाई काफी अच्छे से फिर कोऑर्डिनेट करेगा, नहीं तो फिर ज्यादा जिसको जानते नहीं, जिसके साथ कुछ सिस्टम नहीं है, तो उसके साथ मजा नहीं आएगी। वो हम लोग में ऐसा चलता है। Real fuck shit, bhai. He was working with what? Universal Pictures at that time? no, Columbia. Universal, it wasn't Universal, I think it He was getting a lot of the money from like a big production, right? big production, right? Yeah. But It he was still also Coppola invested- films. Yeah, he also invested his own money. Yeah, that he always does, yeah. It's a lot of tied into it also at that level. I think a lot Hundreds it of has to do people. with people's taste. Like if you trust that somebody has taste and that Huh. they're also watching, things that you regard or maybe that are regarded as classics and have that, depth Huh. that it can have, then you can trust that they've seen a multitude of different stuff. That's when you can come to a thinking. Maybe I'm seeing something, but you're not seeing something, or somebody's seeing something, I'm not seeing something. We can fill those gaps, right? Often. But it's often when you feel that that's not being done that it becomes that frustrating, I feel. Right? Where you have a vision and it's not getting there at all. Because often we find that in our like mixes and stuff as well, right? Like where we're talking to somebody else, where we've gotten the thing to a certain point and then it's on somebody else to sort of get on and now do other things over it. Where we've done our part, we've put in all we could, but now it's to explain that to somebody else who's going to do their bit, right? And sometimes that communication can be smooth, sometimes not. Even between us, the good thing is we have a good working connection, like Rasla said, right? Like where we have that if we have an issue with something, we can just speak it out. But if you don't have that, even earlier in the process, it can be sort of frustrating to sort of go ahead. How do you go ahead if you can't get the main thing out, right? It's kind of you have to compromise both ways. I think so. It's a little bit. Dhanji bhai, Ruab, it shows your amazing storytelling skills, right? So, have you ever considered making short films and stuff? Yeah, absolutely. एक दिन जब पैसा हुआ तब थोड़ा वो हुआ stability rap career में, तब maybe I could pick up the camera, Yeah. I obviously have tons of ideas, but it's about executing it. मेरे पास इतना time नहीं है, energy नहीं है, पैसा भी नहीं है to start filmmaking right now, like I'm still trying to pull off a tour, put out a deluxe album, put out a bunch of tapes this year, shit like that. Working with a band and everything, so yeah. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज लाइक अ कंस्पिरेसी थियरी, आई डोंट नो, मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक, डू यू शेयर अ बर्थडे विद Jay-Z? That's a real thing. That's a real fucking thing. Yeah, real No thing. conspiracy theory about that. मैं- Debunked. Debunked. Yes, no, real shit. That's why he's my twin. He's my birthday twin. That's why I believe in him so much. Oh, we have something to share. I think. I guess. Please, somebody make the announcement. Saibaya, please do the honors. We have been working on a tape 2022-21
22 21 21 जितना लेट बोलो उतना बेहतर है 2000 ये नहीं 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 21 यू केम बैक ना 21 में तू वापस आया 20 दिसंबर बनाया फेब में परफॉर्म किया नहीं साउथ में जैन में परफॉर्म किया 21 में जैन में परफॉर्म किया तो 20 में हाँ तब 2 गाने बने थे तब 2 गाने बने थे 20 ओके जो भी है तब से एक टेप पे काम कर रहे थे और और गेट के सिक्योरिटी का उन बुक निकालो कब आए थे चेक हाँ ये बस जो हेडक्वार्टर्स का रजिस्टर निकला है ऐसे और बता रहे हो तो यहाँ मतलब 21-22 में चालू किया था और अब फाइनली निकाल रहे हैं और बहुत ही स्पेशल डेट पे निकाल रहे हैं बहुत अप्रैल 4 अप्रैल 4 अप्रैल दैट्स 4424 और बहुत सही सही फीचर्स है ये यंगी फ्रैपे फुल पावर शाउट टू फुल पावर और ग्रेविटी है एक गाने पे ध्रुव राजपाल एक गाने पे ध्रुव राजपाल है अशोक विहार नॉट हाँ जी सीज है एक गाने पे अपना और रेबल 7 है एक गाने पे और बाकी हमारे 2-3 गाने हैं और हम तीन भी है ऐसे कुछ ना कुछ पुराना भी वापस ला रहे ये थोड़ा थ्रोबैक वोबैक भी है गानों का एसजीआई एलिवेटेड कॉरिडोर यस सर हाँ मुंह का है मुंह कवे नहीं गाने का नाम बोल रहा था वो कि नहीं नहीं वो तो गाने का नाम अच्छा है, जो नहीं टेप का नाम था ये मुंह का मुंह कवे तो या 4th अप्रैल 4th अप्रैल 4th अप्रैल अभी अनाउंस हो चुका है तो अभी डालना पड़ेगा जब पुट दिस आउट व्हेनेवर यस आनंद सिटी आज रात बारगाम टूर लेग 2 वेट फॉर द ट्रिलॉजी yeah the first one yeah First ever. Thank you guys for being here. It was very